अब रिकॉर्डिंग ठीक है. Recording in progress. Hello everyone, very good evening. I hope you all are doing very, very well. So again, as a part of daily news feed, DNF, by DIA, we are trying to again get into some kind of a perspective of the news. What we believe is that news is not just the news. It has a lot of things which it covers from the news. And from that perspective, like the Hindu paper or Indian Express, whatever we are covering, that also give you understanding from prelims point of view and the main exam point of view. So I welcome all of you. Now before I start with the topics of today's class, I welcome Dr. Krishna Mohan sir. He is with us. Sir, many thank you to you, sir, for accepting the invitation and being the part of this session right now. I am honored, sir. I am very much honored to have you today, this evening, as part of a person to discuss about very important topic which is making a headline. That is a cyclonic event in Bay of Bengal, that is in Tamil Nadu coast. So, dear students, before I start with the topic, let me first read the headline. What the headline is there, right? Now, headline is this one. Cyclonic storm brewing over the Bay of Bengal to bring heavy rain to Tamil Nadu. I'll bring certain Hindi also there so that you are able to understand the part of it. इसमें ये कहा गया है कि तमिलनाडु के तट पे साइक्लोनिक इवेंट हो रहा है और अब बारिश के होने का जैसा मौसम बन गया है. That is what being talked about. Now with the cyclonic event brewing over the Bay of Bengal, predicted to reach the North Tamil Nadu Puducherry coast by Saturday. Like now today this is Friday. Tomorrow this will happen there. Heavy rain is likely to continue over coastal areas of Tamil Nadu till Sunday. That means Saturday and Sunday, 2 days there will be heavy rainfall. Now there is a body, Regional Meteorological Center, RMC. Just like IMD, Indian Meteorological Department, RMC is there, has issued orange and yellow alert. We will try to understand this. What is this alert? Because sir is a very prominent person. He has been he is a professor. He is a professor teaching geography, and he has been teaching for so long time. Sir has a continuous, and he is a very good expert in the area of disaster management, and he has served as a part of a network of disaster management in South Asian countries. He has always been asked as an advisor and expert. So we will try to understand this alert, yellow alert, orange alert, what alert system is there, and heavy to very heavy rainfall. What is being said here? However, downgraded red alert, earlier was red alert, but now it has been downgraded here. Now the name of the place is given: Kodalur, then Mailadurutu, then Tiruvarur, Nagapattinam and Karaikal. The orange alert has been said here. So now here said that in this article, when you read, now what is a very important thing I will just highlight here. According to the RMC, Regional Meteorological Center, the deep depression, now again the word is here, deep depression over southwest Bay of Bengal moved slowly north-northwest ward at a speed of 3 km per hour. That is during the past 6 hours, and lay center about 100 km east north of Trichonmelli. That is what the place given, 320 km southeast of Nagapattinam and 420 km southeast of Puducherry. This is what is given, 500 km from Chennai, from the Chennai coast. Now you know that last year again there was a cyclone, and what is happening now, year by year, this cyclonic event is becoming severe. So we will try to understand from sir every dimension, and we will also bring about the climate change perspective also, how the global warming, climate change is affecting there, and how this part of things are happening with the Bay of Bengal there. So without wasting much time, I would request sir to talk about this part. Sir, you are welcome, sir. You have the part, sir. You can. Yes, sir. Yes. Very good evening to all of you, and thank you very much, sir, for inviting this session.
Yes, sir. Let's say that, if Sir. you can allow me. I would like to start by saying cyclones are atmospheric disturbances. So you all know it's a low pressure system with anti-clockwise spin in northern hemisphere and clockwise spin in southern hemisphere. So this is the basic that you all know. So why they are like this, I will be discussing now. So tropical cyclones that we all know, for the last few years, their intensity and frequency have been increasing. So now what happens? Let's say we all know land specific heat capacity is low. That is, land heats up very quickly, cools down very quickly. Whereas water specific heat capacity is very high. So oceans store large amount of energy for a very long period of time. So especially after the monsoon, land starts cooling and gradually the water accumulates that heat. So when the water temperature increases beyond 26 degrees Celsius, that is 26.5 degrees Celsius, so what happens? The low pressure develops over the water. When the low pressure develops over the water, what happens? Gradually the air becomes warm and the warm air starts rising up, causing low pressure on the water surface. Since oceans can supply large amount of moisture, because oceans have large amount of energy, they are reservoirs of energy. So they supply lot of moisture into the atmosphere, creating a huge cumulonimbus cloud. These clouds can create enormous rain over the ocean, and the wind speed can reach up to 250 km per hour. So that is very devastating. So here in this particular, I'm sharing this here. Sir, can you allow me to share? Yeah, sir. Just a second, sir. I am making that admin part. Yes. So tropical cyclones, they cause a lot of loss of life and property every year. So across the world, whether it is a typhoon in South China Sea or Philippines in North Australian region, or other cyclones in Indian Ocean, or hurricanes in North Atlantic and North Pacific Ocean, all this can cause a lot of havoc. Sir, you can share, sir. Yes, sir. So if you notice this image here that I am showing you, this is the satellite feed. All of you will be able to see this. Yes, sir. We are able to see you. So this is one of the recent satellite feeds. You can notice that how anticyclonic and cyclonic both in this image. So first I'm going to talk about the cyclonic circulation here in the Bay of Bengal. If you all may notice that India and Sri Lanka can be seen clearly. And also you can notice Bay of Bengal and parts of Bangladesh and Burma here. If you notice there is a low pressure over the Bay of Bengal here. And you can notice the entire anti-clockwise circulation of this cyclone here. So in northern hemisphere, cyclones are anti-clockwise. You can notice that here. The center of the cyclone is eye of the cyclone. You can notice that center is in eye, and you can see how the winds are revolving around the low pressure here. So you can notice the center is the cumulonimbus cloud, and the periphery is the tropospheric cloud. Cyclones initially they have a diameter of 200 to 400 kilometers. Initially. Gradually they go up to 1000 kilometers. So when they go beyond 1000 kilometer diameter, we call it as a super cyclone. So you can notice a huge cyclone that is formed here in the Bay of Bengal. So you can see the height of the cyclone can go up to 14-15 kilometers, reaching tropopause. So you can notice that they can cause a lot of wind across this region. So you can notice the southern hemisphere also. There is another satellite field I am showing you. In southern hemisphere, you can notice how the cyclonic circulations are clockwise. You can see. In southern hemisphere, you can see the low pressure high and the surrounding wind circulations are clockwise in southern hemisphere. There is Madagascar. So I want all of you to notice this. In this image, the wind speed can reach up to 200 to 250 km per hour. You can see how the coconut trees along the our eastern coast will be uprooted now. Let's say you can see in this image, you can see the winds can uproot a huge tree altogether. You can notice how the tree has been uprooted here. Okay. So the wind can cause a lot of damage to the structures as well as loss of life and property. Okay. So notice this, friends here. In this, you can notice how the water surface heats up. All of you can notice this water surface heats up, and the air starts going up, creating an eye in the center, and the cross section of the cyclone you can also see. Sir, are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. You can see how the winds are revolving around the low pressure in an anti-clockwise, and you can notice how the wind goes up, the moisture goes up, and a huge
Right, sir. eastern coast of India, Sri Lanka, Tamil Nadu, Andhra, Odisha, West Bengal. What is the cyclone develops in Arabian Sea? The cyclone will move towards Yemen, Oman, Saudi Arabia, correct, Iran, that side. Right, sir. So the cyclones, tropical region, cyclones will move from east to west under the influence of trade winds. Yes, sir. Under the influence of trade winds. You can see in this particular image, I want you to see how a particular cyclone is formed. You can notice it is moving from east to west. This is the hurricane, the way of the North Atlantic Ocean. I'll show that again. You can see hurricane in North Atlantic Ocean moving from east to west. Yes, sir. As it reaches the land, it is called landfall or landslide outside. Below the cyclone, you can see the heavy rain, wind, and how it causes damage here on the Earth's surface. So all this you can notice here. So why am I showing you this? So because many of you have not witnessed, you have just heard about it. So Yes, on sir. the ground, the realities are totally different. So it is like a nightmare, I should say. So being on the field and rescuing people is very, very difficult in this action. And also, the awareness about cyclone is not much. Very few people have heard of the cyclones and they are not ready to move out of their homes when they hear the alert. That becomes very challenging for us to work with rescuing people along the coast. So what I would like to mention further is La Nina. La Nina in the Peru region now. Okay, so the entire Eastern Pacific is cooling. Because of this Eastern Pacific cooling, the Australian, Indonesian region and our Bay of Bengal region is warming up. Right, sir. So that intensifies more cyclones in our Bay of Bengal. So that's the reason your article says cyclones brewing in Bay of Bengal. Now, Yes, sir. whenever there is a La Nina in Peru, so the North Australia region, Indonesia and Bay of Bengal, Southeastern Asian region warms up, causing more cyclones here. And also Atlantic Ocean also will see more hurricanes. In Gulf of Mexico, Caribbean Sea region, there will be more hurricanes this year. Okay? So that's what we have seen all through this year. Okay, this is one part. So once the cyclone move over the Earth's surface, over the water surface mostly, they get recurve. This recurve is because the entire cyclone system is considered as one setup. So when the cyclone starts moving over the Earth's surface, the Coriolis force acts on it, causing it to recur. So if you notice this, I will show you the recurve part here. I'm going to show you the map. Yes, sir. Yes, sir. I'll be able to show you this place once because the recurve Yes, is sir. very important. So the recurve causes the cyclones to get intensified. So the cyclone moving towards our Tamil Nadu sometimes can recurve and go towards Andhra Pradesh. So that will do cyclones get intensified over the period of time. So the entire cyclone, as they move from east to west, they recur and move towards the other states. Yes. So that is when let's say cyclone in Bay of Bengal near Tamil Nadu can recur and go towards Andhra. That is Right. when your article says the cyclones moving northwards, affecting northern districts of Tamil Nadu. Yes, sir. Okay, so that you have to understand here. Similarly, a cyclone near Karnataka and Goa in Arabian Sea can recur and go towards Gujarat and Pakistan. Okay, Right, so sir. the recurve part is also very important. You have to understand this. Another aspect I would like to add is the global warming. Yes, sir. That is true, sir. Global warming, what happens is because across the world air temperatures are increasing, surface temperatures are increasing. Because of global warming, our surface temperatures are increasing and the frequency and intensity of cyclone is increasing Yes, sir. all around the world. So one is the La Nina phenomena you have to understand, and other one is the global warming part you have to understand. Yes, sir. Okay, so yes, sir. Coming to the alert part, sir, I would like to show you this alert we have. So National Disaster Management Authority, okay, we have this alert system to save lives. Okay, because the main intention of main motto of our name is to save them. Okay, that all of you. So before the let's say whenever there is no cyclone, there is no such alert. But as soon as there is a depression, low pressure formed over the water, so there
Right, sir. Then, when the cyclone becomes, when approaches closer towards our coast, then that is 24 hours orange alert. And when the cyclone is close to our land, when the landfall occurs, red alert is given 12 hours before, and it goes 24 hours after this landfall. So like this, the color code systems are used to alert the people. When I say yellow, that means people will be okay. So we have to be alert. You have to collect all your belongings, especially your medicines if you are on medication, Aadhaar card, ration card if you have. Correct, you have to, while you are or what you have taken and you have to prepare yourself. Then when they say it is like almost reaching the coast, landfall, then you have to vacate your house. Along with your kids and animals, pets, you have to walk out of the house along the coast. Up to 5 kilometers we evacuate the coast. That means you can understand here, without this evacuation system, we will not be able to save any lives. So one of the cyclones, that cyclone falling that hit Odisha, we lost 10,000 people. We were there picking up bodies. I'm telling you, this is not, that is something that we don't want to do again. So that is after that, Odisha has come up with a very unique system of alert, so that whenever the cyclone approaches, everybody leaves away from the coast up to 5 minutes. So today we celebrate Zero Casualty Day in Odisha. So Right, sir. even in UN they appreciated Odisha as a zero casualty state when it comes to cyclones. So that is something that we all have to learn, and other states have to follow suit to prevent loss of life. Now all of you know, when they say orange alert was there, when they degraded it to yellow means what? So that means the cyclone is going to some other places. That's what the article said. Sir used the word, the orange alert has been degraded into yellow. Yellow. So that means the cyclone is going in different direction. So those districts will be given red alert later. So I think the article, whatever keywords was there, I have mentioned it. Yes, sir. You have yes, sir. You have explained that one, and red alert, yellow alert, orange one. Yes, sir. This is another diagram which we can see. One more thing I would like to add. Yes, sir. This is called Saffir-Simpson hurricane scale. This is the scale we use to let's say measure the intensity of cyclones. This is used in hurricane for Atlantic Ocean. In India also we are using this. So in UPSC exam they ask, what is Saffir-Simpson scale used for? To measure the intensity of cyclones or hurricanes. So this Yes, is the sir. question they can ask in their exam. And you can see 1 to 5. It ranges from 1 to 5. 1 is like moderate damage to minimal damage. 5 is catastrophic. Okay, so this is the other part, sir. And the last part is the naming tropical cyclones in Indian Ocean region. Our Regional Specialized Meteorological Center (IMD) has come up with the name list. Earlier we had an old name list. Now we have a new name list. So in the new name list there are 13 countries. Each country giving the 13 names. So we have arranged the names of these countries in alphabetical order. You can see Bangladesh comes first, India, Iran, Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi, Sri Lanka, Thailand, UAE, alphabetical order. And each country has given 13 names, so 169 names are there in the list. Right, sir. So we are in the list too, sir. We are in the list too. The name is Bengal. IMD has chosen this name, Bengal for the second. Right, sir. Right, sir. Next will be Shakti. Next will be Monta. Something like that. This list, second will be over, then go to the third list. Okay, sir. So this is how the cyclones are named. So why do we have to name them? To create awareness. Right. Do research, R&D, research and development. That means from every cyclone we learn, we prepare ourselves for the next cyclone. So for disaster management, we need to name the cyclone. Otherwise, there was no need for the naming the cyclone. Sometimes there will be 2 or 3 cyclones in Indian Ocean. One in Arabian Sea, 2 in Bay of Bengal, 1 in Indian Ocean. So then the situation becomes even more dangerous. Yes, sir. The 2 cyclones, yes sir, but the 2 cyclones are very close by, and when they join, so they become even more catastrophic. We call it as Fujiwara effect. Fujiwara effect in, let's say, it's named after a Japanese climatologist. Right, sir. Yes. No, sir, this is really good, sir. This is very, what I can see right now, this 69 names are there. And every country, one by one, they keep on giving their name. And we have all this name, like, so it will keep on, like, every year, this cyclone comes to Bay of Bengal. And you have said very correct, sir, 2 cyclones, when they come close to each other,
then they can merge together to form even a more, yeah. So even I think Gujarat last time there were two cyclones together they were coming there. Sir, you have very nicely explained deep depression. What is depression, El Nino, La Nina and this part of it, alert system. Because what happened, many students, they read about this in the newspaper, but they are not knowing the concept. What is basically concept there. So this is really very, sir, fantastic, sir. This table which I can see right now, there's all the students might be also seeing there, is really very good and very comprehensively give that insight, that part of it. And the animation part was really good, very good, sir. It gave a very good understanding of the landfall and the movement of the cyclone, anti-clockwise and clockwise movement. That is really very good, sir. And sir, this is what is happening every year. That's what. And another angle, what you have discussed, global warming. The angle of the global warming, which is making it more intense. The frequency is increasing and severity also increasing year by year, given the fact of the warming of the ocean being a condition there, sir. Sir, really, sir, thank you so much for sparing your time. And I am really very, very privileged to have you today to talk about this particular cyclonic event in Bay of Bengal. And sir, one more thing, students, I would like to add that, sir, we are working on some kind of platform where sir will be also to teach geography, and sir is going everywhere, Hyderabad, Kolkata, you name the place, Delhi, wherever you name the place, you will find sir. And so that's what I requested sir in the morning, sir, can you spare time? So sir said, yes, I will be coming there. So nice of you, sir. Thank you so much. Sir, I will carry on with the other news, sir. And I'll catch up. Yes, sir. I'll catch up with you, sir, after some time, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you a lot. Thanks a lot, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. So the students, I would like to just so, sir has mentioned about all the things. So I will now go into the next aspect of part of it. Let's go into that area, and one by one, again I will cover the part of it there. So just I will take to the starting from the first headline here. Let me come to the first headline here. So every day you are getting this daily news feed, right? And this daily news feed becomes really very important because this daily news feed gives you complete kind of understanding, right? You get a complete kind of understanding about the part of aspect of daily news. And now, right now, sir was able to talk about this particular area of discussion of the cyclonic event in Tamil Nadu coast there, right? That what we have just right now discussed that. Now what I would like to add here in this context, I am just trying to bring about part of it here, is that there are other small news also there which one need to be aware of it, right? Which one need to be getting the part of the awareness here. So let us understand that also, but just give me a time so that I am able to again join through the part of the link here.
So I'll go through all the news one by one and cover the part of it. Zoom. Just 1 second. I'm just going for this one. Camera. All right. Recording in progress. Okay, so what I'm going to do right now is that after Sir's discussion on the cyclone part, I'm now going to the daily news feed of other articles which we'll cover here. So if you see here this one, I'll go through it one by one. Like first, what was the right to work deleted? Now this is making headline. Now what you find is this is getting, why has there been a surge in the deletion of workers from job card? The Hindu paper in the job card, like manual laborers, है ना, जो दिहाड़ी लेबर होते हैं, जो जिनको एक लेबर कार्ड मिलता है, तो वो उनका यहाँ पर क्यों हटाया जा रहा है नाम कि डज दिस हैव एनी रिलेशन विद गवर्नमेंट मेकिंग आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम? क्या सरकार आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम बनाना चाह रही है? उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये किया जा रहा है आधार बेस्ड काइंड ऑफ पेमेंट सिस्टम मैंडेटरी फॉर मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, एंड उस केस में जो आधार बेस्ड पेमेंट बिकॉज गोइंग टू द बेनिफिशियरी अकाउंट रादर देन करप्शन, टू नैप द करप्शन के लोग घोस्ट बेनिफिशियरी बना के पैसे खा जाते हैं, मतलब ले जाते हैं. तो दैट्स व्हाट हियर, तो दिस व्हाट इज मेकिंग दैट, तो दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज नाउ मेकिंग नाउ सच अ वे दैट द रियल बेनिफिशियरी, जो असली हकदार है, जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, उनके बैंक अकाउंट में खाते में जाए, आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम हो. इसीलिए अभी यहाँ पर ये डिबेट चल रहा है कि ऐसे क्यों अभी गायब हो रहे हैं सारे. यहाँ एक जगह डाटा पॉइंट, यहाँ पे एक जगह होता है इकोनॉमिक नोट्स करके है, और कई बार डेटा पॉइंट्स आते हैं हिंदू पेपर में, तो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. अगला जो आर्टिकल यहाँ पर है, दिस बैन दिस कार्सिनोजेनिक हार्ट बर्न ड्रग हेल्थ. कई बार हिंदू पेपर में आप पढ़ते हैं हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट जो होता है वो वहां कवर होता है, और हेल्थ एस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कुछ भी चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विच कैन बी आज इन द प्रीलिम्स एग्जाम यू शुड बी अवेयर. अब यहाँ पे एक दवा का नाम दिया हुआ है कि दिस इज द जेंटेक, दैट इज अ काइंड ऑफ ब्रांड नेम, और यहां पर उसका इंग्रेडिएंट होता है दैट इज कॉल्ड रेनिटिडाइन. कार्सिनोजेनिक है, मतलब ये दवा कैंसर कॉज कर सकता है. आपको पता है कि मॉडर्न मेडिसिन के कई साइड इफेक्ट होते हैं. एलोपैथी कैन हैव नंबर ऑफ साइड इफेक्ट, तो नाउ दैट साइड इफेक्ट दैट कुड बी देयर. तो देयर इज ऑलरेडी अ केस गोइंग ऑन अगेंस्ट GSK company. GSK is a company which has this Zentac, which has a medicine ingredient ranitidine, which is carcinogenic, cancer causing kind of a molecule. $2.2 billion, right? That is a settlement made by the company in the US. है ना, इसका लॉसूट हुआ, केस फाइल हुआ अमेरिकी कोर्ट में, और ये प्रूव हुआ कि ये जो दवा है कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, और इसके लिए इस कंपनी को GSK को $2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देना पड़ा एज ए कंपनसेशन, राइट. तो दैट इज अगेन व्हाट कम्स. अब यही चीज यहां आता है कि क्या हम ऐसे चीजों को अपने भारत में देखें, इंडिया में देखें. ये तो यूएस है, वहां मैटर गया तो दैट वाज डन. बट आज इंडिया में भी कई तरह दवाएं बिकती है. द लॉट ऑफ सेल्स ऑफ द मेडिसिन ऑन द इन द कंट्री देयर, एंड दोस कंट्री, हो सकता है कि हम दवा खा रहे हैं बट हमें नहीं पता है कि हमारा लीवर में, किडनी में, अदर ऑर्गन में क्या उसका इंपैक्ट हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है. तो क्या गवर्नमेंट को भी कॉशियस होना चाहिए ऐसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी उसकी दवाओं को लेकर उसके जो मार्केट में आता है. तो दैट इज वेरी गुड आर्टिकल, दिस इज वेरी वेरी गुड आर्टिकल, राइट, वेयर दैट वी शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ स्टॉपिंग सच काइंड ऑफ मेडिसिन यूज इन द कंट्री विच कैन कॉज कैंसर, है ना. ये दिस इज वन एडिटोरियल पेज में आया हुआ है. देन कमिंग हियर, स्कूलिंग, दिल्ली एयर पोल्यूशन. ये जो आर्टिकल है, जो आपको पता है, दिल्ली एयर पोल्यूशन, विंटर स्मॉग, दिल्ली एवरी ईयर सफर विथ विंटर स्मॉग. और इस समय जो स्कूल को जो बंद किया जाता है, कभी अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि अकॉर्डिंग टू द नीड इट कैन बी हाइब्रिड, समटाइम्स ऑनलाइन समटाइम्स ऑफलाइन, दैट बोथ कैन बी डन बाय द स्कूल अथॉरिटी. तो यहां ये आर्टिकल आता है कि जो अभी जो विंटर के टाइम में दिल्ली का जो जहरीला हवा है, छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए और उन सब के लिए क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म क्या चीज, उसके लिए स्कूलिंग इन इंडिया इन टाइम्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी,
ये यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर है कि हम कैसे प्रिवेंट करें, कैसी चीजें करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैप के बारे में, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट जैसे से एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल बढ़ता जाता है, वह सिवियरिटी लेवल पहुंचता है, तो वहां पर गवर्नमेंट इसके करते हैं। अब ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट का लिखा हुआ है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आप जानते होंगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के ये डायरेक्टर रहे हैं, और ये कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में आपने इनको टीवी में देखा होगा। कोविड के टाइम में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया लगातार न्यूज में बने रहे थे, तो उनके द्वारा यहां पर आर्टिकल है, दिस व्हाट यू कैन रीड अबाउट देयर, कि वहां पर जो प्रिवेंटिव हेल्थ, कि हम बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे इंश्योर करें इस तरह के जहरीले हवा में जो दिल्ली के एयर पोल्यूशन में, दैट इज व्हाट इज दिस पार्ट हैज कम। देन कमिंग टू हियर दिस compensation of news publishers by big tech platforms is must। अभी यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है ना, उन्होंने बताया कि नेशनल प्रेस डे लास्ट वीक में कि जो फेयर कंपनसेशन टू मीडिया कंपनीज फॉर द यूज ऑफ देयर कंटेंट बाय बिग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, उसके बारे में उन्होंने बताया कि उसके लिए कोई है ना मसौदा होना चाहिए, कि जैसे जो बिग टेक कंपनीज होते हैं, जो मीडिया, जो ANI या जितने भी चीजें, अब आजकल सोशल मीडिया हो चुका है और वो सारे कंटेंट सोशल मीडिया का जाता है और वो पैसे कमा रहे हैं, तो उनको ये मीडिया को उसको लिए क्या उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दैट इज व्हाट इज विद दिस आर्टिकल इज, ये ओपन, ये नॉर्मल एडिटोरियल पेज का आर्टिकल आया हुआ है, दिस व्हाट इज। देन कमिंग टू हियर प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी टॉक, यू नो दैट December next month UN is going to finally adopt right प्लास्टिक ट्रीटी। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जीरो ड्राफ्ट प्लास्टिक के यूज को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी तैयार हो चुका है, ठीक है। उस पर इसी साल के अप्रैल महीने में चर्चा हुई है, डिस्कशन हुआ है, और दिसंबर के मंथ में इस ट्रीटी पे, प्लास्टिक ट्रीटी, UN प्लास्टिक ट्रीटी पे फाइनली इस पे डिसीजन लेके इनको एडॉप्शन के लिए किया जाएगा, सिग्नेचर, ज्वाइनिंग, और फिर बाद में जाकर रेटिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस एंड देन फाइनली इंप्लीमेंटेशन। तो ये होने वाला है। और आपको पता है कि प्लास्टिक का जो यूज जो है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी न्यूज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। प्लास्टिक, एंड टुडे प्लास्टिक इज उबिक्विटस, एवरीवेयर इज अ प्लास्टिक, हर तरह की चीजों पे अलग अलग तरह की प्लास्टिक का यूज हो रहा है। एंड जब वो इन्वायरमेंट जाता है, सॉइल, वाटर, ओशियन, आपको पता है मैंने लास्ट DNF के सेशन में बताया था दैट ग्रेट पैसिफिक गार्बेज, है ना, ये से मैं डिस्कस भी करता हूं क्लासेस में। तो दिस प्लास्टिक पोल्यूशन, एंड फॉर दैट एन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, दिस ट्रीटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लैंडमार्क, दैट इज गोइंग टू वेरी वेरी लैंडमार्क देयर। तो दैट इज वेयर ये इसके बारे में बुसान इज अ प्लेस इन साउथ कोरिया, वहां पर ये ग्लोबल जो स्कॉर्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, अब मीटिंग इज गोइंग टू बी देयर, दैट इज वेयर आई बीन टॉक्ड अबाउट हियर। तो यहां पर उसके बारे पे ये आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट में, आप इनको जरूर पढ़िए। नाउ कमिंग हियर, सुपर कंडक्टर मटेरियल विच कैन बिकम सुपर कंडक्टर। व्हाट इज सुपर कंडक्टर? वेयर रेजिस्टेंस बिकम मिनिमम और जीरो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदू पेपर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्टिकल। तो यहां जो सुपर कंडक्टर का है, नाउ व्हाट इज लिंकिंग विद क्वांटम कंप्यूटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया क्वांटम कंप्यूटिंग। When I take the class, I discuss about quantum computation, वहां मैं बताता भी हूं। तो वहां पर कई तरह के जो मटेरियल है, साइंटिस्ट आज लैब में ट्राई कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेट मी रीड द आर्टिकल। न्यू मोर सुपर कंडक्टर ओपन्स द डोर टू न्यू क्वांटम मटेरियल्स, है ना। यहाँ पर मोयर मटेरियल्स कहते हैं, जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो, दिस मटेरियल मोयर मटेरियल विच इज मेड फ्रॉम सेमी कंडक्टर, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स, और इसमें सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होता है जो हम क्वांटम कंप्यूटर बनाने में यूज कर सकते हैं। तो आपको जब भी साइंस टेक का आर्टिकल आता है तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझना है। ये बात मैं बार बार बोलता हूं, मेनी टाइम्स आई रिपीट दैट फर्स्ट ट्राई टू ग्रास्प व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग, व्हाट इज सुपर कंडक्टर, ये बेसिक चीजों को पहले समझना जरूरी है। वंस यू गेट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, देन यू डोंट हैव टू वरी, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Then you can easily understand such articles. The Hindu paper articles on science and technology will be cakewalk for you. तो एक नया मटेरियल है, न्यू मोयर मटेरियल, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, जो कि सेमीकंडक्टर से बनता है,
और ये हम क्वांटम के जो सिस्टम होते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं, क्वांटम चिप वगैरह बना सकते हैं वहां पर। तो वहां पर उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल आया, दिस इज वेयर पार्ट कम्स हियर। फिर यहाँ पे डिफेंस न्यूज, इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी रिसीव्स लॉजिस्टिक ड्रोन्स फॉर यूज इन ईस्टर्न सेक्टर। पूर्वी सेक्टर जो हमारा बॉर्डर एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, अरुणाचल प्रदेश और वो जो भाग है उस साइड में, ईस्टर्न साइड में, वहां पर आर्मी को ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिससे हम जो सर्वेलेंस कर सकते हैं बॉर्डर एरिया का। और खासतौर पे जो आपको पता है भारत और चीन के बीच का जो बॉर्डर क्षेत्र है, इंडिया एंड चाइना, चाइना इज यूजिंग ड्रोन, चीन जो है ड्रोन यूज कर रहा है, तो इंडिया पीछे नहीं रह सकता, इंडिया कैन नॉट बी बैक। सो लॉजिस्टिक ड्रोन जो कि लॉजिस्टिक सप्लाई करेगा। और आपको पता है जैसे अरुणाचल प्रदेश हाई एल्टीट्यूड एरिया है, राइट, हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ईस्टर्न साइड की बात हो रही है, हाई एल्टीट्यूड एरिया है, वहां तक सामान को पहुंचाने का काम ड्रोन कर सकता है। इज अ वेरी गुड आर्टिकल विच टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है हम कई जगह पे ले सकते हैं। एक मिलिट्री एप्लीकेशन है, और मिलिट्री में ही है लॉजिस्टिक सप्लाई, मतलब कोई राशन, कोई फूड, कोई रिलीफ ऑपरेशन हम ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, ये है ना, Sabal 20 logistic drones procured from Endure Air Systems for deployment in Eastern sector। ठीक है, IIT कानपुर है ना, ये एडवांसमेंट हुआ है, मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम से बनाया गया अनलक्ष्य के दौर जो है। तो सबल 20 जो है ये इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है, आप समझो हेलीकॉप्टर जैसा है, ड्रोन जो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन काम करता है वहां पर। तो यहाँ पे वेरिएबल 20 kg तक का पेलोड वो ले जा सकता है, 20 kg तक का जो चीजें हैं उसको कैरी कर सकता है ये ड्रोन। द 20 kg इज देयर, इंडोर एयर, दैट व्हाट इज गिवन हियर। IIT कानपुर इंडिजिनस बनाया गया, दैट इज व्हाट टेकन हियर। देन नाउ सुप्रीम कोर्ट सिक्स बैलेंस बिटवीन बेल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एक्यूजेशन एक्यूज टू टाइमली ट्रायल। एक होता है बेल, एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड बाय पुलिस अंडर एनी FIR, अरेस्ट वारंट एंड FIR, एंड दे सीक फॉर बेल, राइट। और कई बार होता है फॉर हीनस क्राइम विच आर इन द जेल, दे ऑल्सो दिस काइंड ऑफ मर्डरर्स एंड क्रिमिनल्स, दे सीक फॉर बेल। तो वन इज बेल एंड अनदर थिंग इज द ट्रायल। नाउ इट इज फ्रॉम लॉ एस्पेक्ट, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। सो सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू पुट अ बैलेंस कि जो ऑब्लिगेशन ऑफ एक्यूज्ड टू टाइमली ट्रायल, जो एक्यूज्ड हैं जिन पे गुनाह का आरोप लगा है, उनका जो ट्रायल होना चाहिए, कोर्ट में हियरिंग होनी चाहिए, और जो बेल जो लिया जाता है उनके बीच में क्या बैलेंस, उसका मिसयूज या अब्यूज ऑफ पावर, उस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज है। तो जस्ट रीड दैट, हम लोग वही कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग डेली न्यूज फीड में, वी आर गिविंग यू सच काइंड ऑफ आर्टिकल्स, कि ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आप खुद से ढूंढेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, व्हाट इज रेलेवेंट व्हाट इज नॉट रेलेवेंट। सो वी आर जस्ट पिकिंग अप एंड गिविंग इट देयर इन DNF, सो विच यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड देयर। तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर है। So that is what the from a legal point of view the article is there. Now coming to this one, we have discussed right now cyclonic event, right, from the part of now, but again I'll repeat there. See, Tamil Nadu coast, right, Saturday and Sunday will have heavy rain because of the cyclone which is coming there, and every time in the month of November there is this kind of depression which is formed. तो ये येलो अलर्ट एंड ऑरेंज अलर्ट, जहां पर जो भी कोस्टल एरिया है वो खाली करा लिया जाता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यहां पर आया है, क्योंकि यू नो दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून कोरोमंडल कोस्ट, बे ऑफ बंगाल, दिस डिप्रेशन एंड द काइंड ऑफ साइक्लोनिक इवेंट हैज अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण और भी ये सीवियर होता जा रहा है। लास्ट ईयर भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, इस साल भी इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी प्रिपेयर्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसकी प्रिपरेशन है, ताकि कोई भी कैजुअलिटी ना हो, है ना, वहां पर चीज है। तो कल के DNF में भी मैंने बताया था, आज के DNF में भी है, और ये कल भी न्यूज में रहेगा, इसके बारे में खबर होगी वहां पर। तो ये चीज यहां पर है। तो दिस इज वेयर द लास्ट आर्टिकल कम्स, कि दैट बे ऑफ बंगाल, दिस cyclone which is coming up there, a regional meteorological center has already issued alert and warning. Red means immediate evacuation should be done from the coastal area without any hesitation. People should evacuate fast, otherwise it will be very much catastrophic
लोगों की जानें जा सकती हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, डिजास्टर। तो वहां पर वही चीज है कि दिस गिवन ईयर एंड दिस पार्ट मेंशन दैट नागापट्टनम, त्रिवरूर, देन कोडलूर, इस सब जगह पे येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। तो कल और परसों भारी बारिश होगी। तो हर साल जो उसकी तबाही होती है उसके लिए तैयारी, डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, बीइंग प्रिपेयर्डनेस। सो टुडेज डीएनएफ, these are the articles which we have covered, so that ये जो सेशन मैं ले रहा हूं, this particular session what I am taking every day, so that you are totally prepared to understand every dimension of the news। और एक चीज जो मैं बार बार कहता हूं कि देखो, आप एक जगह न्यूज आपको कंपाइल करके मिल गया, लेकिन आपको पढ़ना होगा। अगर हम एक एक आर्टिकल को ले, if we take single article, it can take half an hour, 45 minutes discussion। What is my target is that कि given the newspaper, one day newspaper, important articles जो हम लोग डीएनए पे दे रहे हैं, what we are giving DNF, you are aware of that particular articles and you read and revise and you are reading that and connecting with the GS, general studies। तो एक होता है ना कि आदत डेवलप करना, you are developing a kind of a habit of reading articles rather than spoon feeding of gist। कि कोई टीचर यूट्यूब चैनल में आके पूरा एक तुम A to Z सब कुछ बता दे रहा है, पीपीटी को लेके, पावर पॉइंट को लेके बता दे रहा है, सारा कुछ कर दे, वो नहीं, वो चीज नहीं। आर्टिकल है आपके सामने, आर्टिकल किस कॉन्टेक्स्ट में, इसको पढ़ के समझ के अपना जीएस के साथ कनेक्ट करना और उसको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो आई होप दिस ऑल हेल्प्स यू ऑल। सो विल स्टॉप हियर और कल फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्रेस द बेल आइकन and share to your friends। So I will again discuss important headlines tomorrow's DNF। See you all। जय हिंद, जय भारत। Thank you।